Today, at the World Cup, we saw teams fighting to survive, teams trying to secure the qualification, and some big tactical lessons. Some teams controlled the game with quality, some teams showed incredible efficiency, and some teams learned that one mistake at this level can decide everything. The biggest story for today is the Brazil national team finally look like Brazil. Morocco showed why they are one of the hardest team to play against. And Mexico national team delivered a complete performance. South Korea national team suffered a painful defeat, right? Let's discuss a little bit more about what was the final round that took place of group stage of group A, B, and C. Let's talk about Switzerland and Canada. Both going into this final round, both were trying to fight for the number one spot, right? And that's exactly what Switzerland did. They fought like a team. What Switzerland wanted to approach this game with control and to keep possession, move Canada sideways, attack spaces when defenders move. They did not rush. They wanted Canada to chase. That's exactly what happened. That's exactly how they scored the two goals. The biggest tactical switch what I saw from Switzerland's manager was like Switzerland created overloads in midfield. They tried to a 3v2 situation. They forced Canada midfield to choose to follow the ball or to protect the space. ये dilemma में लाके छोड़ दिए थे. The hesitation created the opportunity for them. And of course, for Swiss, when we talk about the midfield, we should talk about the control, the rhythm they always possess. The players understood when to slow the game down and when to escalate. That experience was different. And Canada had energy but struggled when Switzerland controlled the ball. They were pressing work with something. I mean, भाई क्रक्स ये हो रहा बात का कि कनाडा शोड फाइट बट बाय द टाइम दे पिकअप द पेस देर हो गई थी दो गोल पड़ गए देन कनाडा केम एंड स्कोर एंड वो लास्ट का 15 मिनट जो था ना कनाडा वाज गोइंग एट इट लाइक अ बूम 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 दे वर ट्राइंग टू गोइंग एट इट लेकिन मिल रहा ना था बट ग्रेट जॉब एट जेसी मार्च they all the three um, host nation has qualified to round of 32. That's incredible. And let's see how things will turn up. Congratulations, Switzerland fans. You guys deserve the victory. You are sitting in the number one spot. Now, let's move to Bosnia and Qatar. Ah, this match, man. See, Bosnia were direct. They did not want it unnecessary possession. प्लान was straightforward. Win the ball, attack quickly. Simple. वो चीज़ उनको वर्कआउट करके वो चीज़ पर उन्होंने 3 गोला मार दी खतर दे ट्राई टू कम बैक बट देखो खतर दे आर रेनिंग एशियन चैंपियंस बैक टू बैक मेरे को वो बातें समझ में नहीं आ रही तो एक तरफा क्यों हार जा रही है टीम हर वक्त Qatar had a poor 2022 World Cup. They had poor 2026 World Cup as well. Reigning Asian champions. और जापान के बारे में अपना we will talk about little bit when Japan plays tomorrow. कि by Japan is not the out of 5 Asian champions. Why Japan is not winning 4 or 3? क्यों खतर आ रही जीतने वॉट वेयर इज द स्टॉप इतना क्वालिटी उन्हें एशियन गेम्स में शो कर रही वर्ल्ड स्टेज पे आया तो क्या हो जा रहा 3-1 ridiculous see tactically they attacked the channel कौन Bosnia and instead of only going through the middle they looked for runners behind the defenders they were sending crosses they were going for the second ball situation और खतर की प्रॉब्लम तो हमेशा वो सिंपल थी दे डोंट क्रिएट इनफ डेंजर गोइंग फ्रंट they need more creativity between the lines the problem is was not effort the problem was creating the quality chances वो चीज पे मार खा गई पूरी खतर
But Bosnia, kudos, you guys progress to second round now. Hopefully, you guys get the good run. But I'm happy for Deno Jaka, not Jaka, Deco. Deco के लिए Deco कैसा pronounce करते हो? But I'm happy for him. Let's talk about Scotland and Brazil. देखो, let me right away say, Scotland, आपको गोल दिख रहा ना, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम ब्राजील, दो गोल तो स्कॉटलैंड ही प्लेट में डाल के गिफ्ट कर दिए उन लोग को। आओ भैया मान लो, हाँ गोल बोल के। देर वॉज probably the biggest tactical story of the day because Brazil looked like Brazil. Brazil played with confidence. They were attacking ideas were simple. Create isolation, get the attackers into 1v1 situations wherein you have Cunha, you have क्या नाम है अपना विनी, ये लोग को बॉल पिलाओ 1v1 situations पिलाओ and force the defenders to back out. ये करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, ब्राजील ऑफन लुक लाइक फोर, आई मीन they started with four defenders, two midfield, four attackers, kind of ऐसा progress में जा रहे थे वो लोग। The purpose is to create creative, give creative players more chance on the ball. Like जैसे लुकस पाकेता है, उसको बहुत chances मिल रहे थे to create something. The biggest difference was the moment when Brazil was not standing still. Attackers rotate, players switch position, defended knows who, defenders were literally, I mean, confused to whom to follow, whom not to follow. ये चीज पे ला के छोड़ दी थी डिफेंडर्स को। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड डिफेंडेड डीप, बट अगेंस्ट एलिट अटैक डीप डिफेंडिंग ओनली डजंट वर्क। Concentration stays should always stay perfect. Transition should be controlled. One mistake creates a huge problem. यानी बट ये चीज़ तो क्या नाम है अपने स्कॉटलैंड को समझ में आई होंगी दैट स्कॉटलैंड अच्छी टीम है यार। Probably they progress to second round. They still have to wait. Look at the टॉप थ्री टीम्स कैसा परफॉर्म करी वगैरह, दूसरे ग्रुप्स के भी। बट दे हैड गुड चांसेस में, एटलीस्ट गैप को दो गोल से तो कम कर ही सकते थे। बट या बट ब्राजील के लिए दिस वॉज नॉट ओनली अबाउट विनिंग, दिस वॉज अबाउट कॉन्फिडेंस। ब्राजील लुक्ड फास्टर, मोर एग्रेसिव, मोर कनेक्टेड, एंड देयर वाज नेमार। नेमार गेव आफ्टर 7, आफ्टर फोर्थ क्वार्टर, अब तो क्वार्टर ही बोलना, आफ्टर 71st to 72 मिनट नेमार कुलाए। he he was like always comfortable on the ball. He was trying to do the link up play वगैरह करने की कोशिश कर रहा था। uh, Hopefully we'll able to see him as a super sub in upcoming knockout matches. But um, now let's talk about Morocco and Haiti. भाई साहब बहुत बेहतरीन था ये मैच भी। देखो, मैनेजर जो जैसा सेटअप कर रहा था मोरक्को का, दे आर डेंजरस। मोरक्को इज डेंजरस बिकॉज दे कैन अटैक एंड डिफेंड टुगेदर। they build patiently, but the only way, the once they lose the ball immediate, and they put immediate pressure। लेकिन इस बार क्या दिखा मेरे को, वो लोग ऐसा दिख रहे थे कि हाँ भाई हैती है, क्या कर लेते हैती, क्या कर लेते, मैं दो गोला मार दी हैती। गुड थिंग वाज दैट when Haiti scored, मोरक्को केम बैक स्कोर्ड, काउंटर पे दूसरा पड़ गया, देन दे केम बैक स्कोर। पर जो स्कोर लाइन दिख रही है आपको 4-2, थोड़ी फ्लैटर टू रिसीव है, एंड में मोरक्को अच्छा पुल अप कर ली। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट टू गोल्स और गोल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया ब्राज़ील से, कम था ब्राज़ील से, तो सेकंड फिनिश करी मोरक्को। एंड लेट्स सी हाउ व्हाट पाथ दे गेट नाउ। Attacking patterns were straightforward for Morocco. Wide players stretching the defenders, midfield running and arriving a little late in the box, quick combination, and the Morocco attackers were constantly moving. The defenders never got comfortable. The opposite defender था हाइटी का। बट हाइटी के लिए पॉजिटिव्स बहुत है। हाइटी इवन इन डिफीट हाइटी शोड करेज, ऐसा ये तो बोल सकता हूँ मैं फॉर श्योर। दे डिड नॉट completely collapsed, they attacked and created moments। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें क्लिक नहीं हुए हाइती के वास्ते। बट या मोरक्को, कंग्रेचुलेशंस, यू गाइस प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज, एंड लेट्स सी व्हिच सॉर्ट ऑफ ओपोनेंट यू गेट। एंड मेक्सिको एंड चेकिया, भाई चेकिया इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड कप नाउ।
बट मेक्सिको भाई साहब देख टीम तो भाई आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दिस मेक्सिको टीम प्रोग्रेस डीपर 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 इन टूर्नामेंट बिकॉज बहुत बढ़िया खेल रही है यार इंटेंसिटी हाई है दे आर गोइंग फॉर द सेकेंड बॉल अटैक क्विकली कर रही है ये लोग एंड दे वेर फास्ट एंड दे एकदम मेंटालिटी उन लोगों की ऐसी होगी कि when they were recovering the possession right they immediately look to progress the ball forward वो लोगों को गोल मारना 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 बोल के छड़े हुआ है दिमाग में that makes this Mexico team very dangerous and the captain Alvarez bhai sa again what a world class performance he had today Czechia they struggle to handle Mexican pressure when Mexican force mistake they punish them right वो हो गया वो ऑफ कोर्स मिस्टेक फोर्स करेंगे वो लोग वो इनडिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे चकिया को दे वे सक्सेसफुल एंड दे स्कोर्ड हैंडफुल ऑफ गोल्स बट द गुड थिंग इज दैट दे शोड क्लास while playing but बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम आ गया चेकिया के सामने एंड आई एम सो हैप्पी फॉर मेक्सिको मेक्सिकन फैंस to see you guys in round of 32 topping the group brilliant 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 man brilliant but biggest takeaway from today's matches were that Brazil coming back as a serious contender now because this was the first time they looked like a team I mean, capable to go deep into tournament. And Morocco continues to improve. They are not just a surprise anymore. They are here with a statement. Mexico showed the tournament football is about timing and discipline and taking your chances. ये ये चीज से ये पैटर्न चल रहा था लोग का बट या गुड मैचेस टुडे टुमारो वी गोना हैव ग्रुप ई एफ एंड डी गोइंग एट ईच अदर तो one of the key matches that I'm looking at is Germany Ecuador क्या करती वो देखना है मेरे को स्वीडन एंड जापान का अच्छा मैच रहेगा एंड लेट्स सी टर्किया विल गो विद द प्राइड और नो बट यूएसए तो बहुत ब्लेजिंग हॉट फॉर्म में यार लेट्स सी how things will turn on see you in the next one